Hello everyone. How's it going, people? कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to the channel. Welcome back to Boys in Blue 9320, the Desi home for all things Manchester City. 5 trophies in 2023. We have seen it all. We have won the lot. We are Manchester We are City. inevitable. We're right at the top. And look who's back. My partner on the channel, Tanmay. How is going on? All good, man. All good, man. Conquered England, conquered Europe, conquered the world. Manchester City, bro. Let's go. But have we done it at Goodison Park? We did, Goodison Park? bro. We did. And as you can see on your screens, this is the message not from Guardiola but from us as well. Doubt us again. We'll see what happens. We'll see what happens. We will be there. We'll see what happens. We will be there. Yeah. Before starting our regular thing, I would like to say that please like the video if you like what we do. Share it with your friends, with your family, with your fellow Blues. Make them part of the community. We are 11 subscribers left for 150 mark. Well, I wish it could have been done by 31st December before the year ends, but अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो at least like keep the support going और थोड़ा हमें push करते रहिए towards reaching that goal. And if you have anything to see, if you feel like just putting your suggestions, आपको कि जो भी आपके thoughts है जो भी about what we do and how the team perform and everything, the comment section is right for you guys to just pour your thoughts in. So yeah, let's begin. Everton 1, Manchester City 3. 3 points and no clean sheet yet again. So before starting the thing, मैंने preview में भी कहा था that all I care about for this game is those 3 points. No matter how you get it. Yes. Whatever it takes, just get those 3 points. Just end this misery. Just show that you're serious. Just show that you mean business at this point. And you're not. And even I like this quote from Phil after the game that we are world champions, and it's high time we show that we are not world champions. Yes, definitely. So, before I talk about all the goals and what happened and everything, I just want to know your first thoughts because एक तो तू बहुत टाइम के बाद episodes पे आया है, बहुत टाइम के बाद तुझे लोग podcast पे देख रहे थे. I think so. I would like to open up the whole segment by asking you what were your first thoughts when you were watching the game? भाई क्लब वर्ल्ड कप देखे तो अच्छा लगा था कि अलग टूर्नामेंट है, अलग सा सिचुएशन है, अलग जगह पर है, ट्रॉफी जीत गया, अच्छा लगा. बट प्रीमियर लीग की सेम स्टोरी चल रही थी, नो क्लीन शीट, वैसे ही स्टार्ट, पहले गोल खाओ फिर होप करो यार कैसे तो कम बैक कर रहे हैं, फिर कम बैक करो, उसके बाद फिर प्लीज बॉटल ना करो. वो भी एक अलग कंसर्न अभी सिटी फैंस के लिए कि लाइक 2-1 होना इज नॉट अ बिग इशू, 2-1 रखना इज अ बिग इशू ना. वो चल रहा था दिमाग में. तो overall like good to have the Premier League back, good to have that Boxing Day वाला post Christmas scene. It's good that midweek वाला football अलग scenes, but एक point पे तो भाई आ गया था, एक point पे गोटे मुंह में आ गए थे, as the legendary रवि शास्त्री said. कि start अच्छा था, not like on the game we had good start, मतलब अच्छा कर रहे थे, chances थे, shots थे, but eventually वही हुआ, Rodman brought a mistake. End up when Everton won it, I'm like, oh, here we go again. वापस से 3 point यार, वापस से points drop हो गया and all. But finally, as you said, did we return Goodison? Yes, we did. The thing is for me because again Goodison after that 10 points reduction, Goodison Everton were like a unified team. Okay? Everton were being more dangerous and it was a hard fixture. Even though जो पुरानी history regarding City's performance at Goodison वो अलग picture बयान करती है, but this game was tough because of the form that we're coming, and then यहाँ से चीजें बहुत ज़्यादा critical हो जाती है. And एक तरीके से after that second goal, I'll talk about each goal individually, but after that second goal in particular, अभी पता है थोड़ा change ऐसा हो गया that 1-0 उतना तकलीफ था जितना भी 2-1 देने लग गया है. Exactly. So वो जो I think so
जो 65 66 मिनट 67 पे गोल था, 68 से लेके 86 Yeah. मिनट जो I think so those were the most nervy moments as compared to 1-1 वाला भी अभी 1-1 वाला भी the nerves were there. I mean I was a bit calm. Yeah. I was okay, but then 2-1 I was like वहां पे थोड़ा सा मेरा भी और जस्ट 2-1 के बाद वो कल्वर्ट लुइन का 1-on वो आया था, एक शॉट आ गया था जो which was this close to score. I'm like bro, और बीच में ये निकालना है not shot. again, not again, not Not again. again. तो Yeah. अगर मैं पहले तो जस्ट बिकॉज वो गोल कंसीड, अगर मैं फर्स्ट हाफ में पर्टिकुलर बात करूं तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट पता है एक तरीके से ना अभी ना विशियस साइकिल चल रहा था, ठीक है, कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट 28 मिनट्स वी वर देयर, we were dominating the first 28 minutes. Yes. फिर and we failed to took our chances. Yeah, chances से अगर and then chances we failed to take our chances. इसके बाद फिर we conceded a goal on individual mistake and sloppy defending. जो मैंने अगेन ये भी कहा था कि भाई अगर कुछ होगा if Everton would take the chances उसे हमारे individual mistakes पे लेगी, जो उन्होंने बखूबी लिया. Yes. That goal and then that gave them the opportunity to come back in the game. Yes. तो जब हम मेरा just want to know तेरे से कि जो हम लोग जब that whole नूनेस वाला जो मिस था, ठीक है, जहाँ पे वो he literally went straight towards the keep Pickford and then वहां से rebound तो Alvarez was just close and तो उस वक्त again क्या तेरा reaction था when you saw that thing happening कि you know we are because it's the same thing, ये हमने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी किया था, ये टॉटनहम के भी कहते हैं कि हमें चांसेस लेने चाहिए थे बिकॉज अगर टॉटनहम वाला गेम याद होगा सो आइडियली Yes. वी शुड हैव बीन लाइक अ 5-0 और व्हाट लाइक एक 5 गोल फर्स्ट हाफ में हो सकते थे अगर हमने चांसेस पूरे Yes. तो तुझे लगा था कि एक पॉइंट के बाद कि अरे यार मैं ये सेम गेम ना पिछले 6 बार से सेम गेम देख चुका हूं. I'm Yes. watching this is like a 7th time you're repeating the same 90 minutes again. Yeah, it looked like that typical Palace game या Spurs game की ये ड्रॉ होने वाला है या सिटी may not win because goals ही नहीं हो रहे थे यार. हमारे shots ज्यादा थे, कुछ first 15-20 minutes we had 7 shots, they had only 1 shot and it was like कि City will grow more into the game and इतना clear cut chance आया and it didn't get convert. I'm like कि bro this should not happen again, that हमें same जो चीज हो रही है and that's where you know the players like Kovacic, Nunes, Grealish have to perform because अगर in that place अगर गुंडोगन होता या केडी भी होता, you know that could have been a different story. You can even go back to the last year when Tomiyasu made one simple small mistake. Arsenal were perfect for 15 minutes. Tomiyasu ने एक गलती किया, KDB ने एक kick मारा, goal. Just one KDB and it was 1-0. That's where I think these players have to, you know, step up more game. Obviously, I'm not saying Nunes did what he would have done. He just had a shot, he made a good save. But that's where you need to, you know, improve more quality. That's where you need to, you know, close this thing कि यार 1-0 हो जाए, regroup, start again, and then score more goals. And we need to take these chances, man, because now we are coming into second half of the season and we can't, you know, let this happen again and again and again. As I said, जब chances आ रहे हैं, we should now be able to convert them and be in a comfortable position. यार वो होता है ना जैसे कभी तुम्हारे घर में लाइट चली जाए, ठीक है, और तुम्हारे पास मतलब काफी टाइम पता चल रहा है कि लाइट आ नहीं रही हो, तुम्हारे पास देखने के लिए सिर्फ एक चीज बची है और तुम्हारा टाइम पास करने के लिए वो चीज बार देख रहे हो. ये वही गेम था मेरे हिसाब से. बट एक तूने ग्रिलिश के बारे में कहा थी जो फॉर्म नहीं फर्स्ट हाफ में, ग्रिलिश अगर फर्स्ट हाफ के हिसाब से ग्रिलिश वाज द मैन ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट हाफ बिकॉज बारिंग एवरीवन. Yes. सिर्फ मेरे को लगता था कि भाई किसी आदमी से अगर मैं एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहा हूँ टुवर्ड्स गेम कि जिसको जो करना चाहिए वो कर रहा है, उसे ग्रिलिश कर रहा था. यू नो ही वाज बीइंग वेरी एग्रेसिव, ठीक है ना, वो रन्स बना रहा था एंड इवन आई थिंक सो दिस इज टिपिकल ग्रिलिश थिंग, यू नो कि ही काइंड ऑफ ट्राइज टू ड्रॉ प्लेयर्स टुवर्ड्स हिम. तो तू देखेगा तो हैरिसन, आई थिंक सो हैरिसन ड्रॉ किया था उसने, I'm not wrong. हैरिसन किया था, पैटरसन किया था, ब्रेथवेट को किया था. पैटरसन किया था, करेक्ट, पैटरसन को किया था, ठीक है ना. तो हैरिसन पैटरसन दोनों को ड्रॉ करके he was trying to create space for attackers like Foden. Yes.
तुम्हारा नूनेस की भाई तुम you can drive the ball and then you can kind of break through their press, but and he was doing everything right. तो उसके लो क्रॉसेस भी आ रहे थे बट उसको कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं था. और एक बहुत पता है एंड अगर मैं नूनेस की बात करूं आफ्टर ग्रिलिश आई थिंक नूनेस वाज फॉर मी ही डिड अ Yes. डिसेंट उसने चांस और जो उसने चांस लिया था आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर. ठीक है ना. आई थिंक दैट इज वन ऑफ हिज मेजर फ्लॉज कि उसका फाइनल थर्ड में का डिसीजन मेकिंग बहुत खराब है. बट अगर उसका एक रीजन मेरे हिसाब से भी लगता है कि यार वो ऐसी हाई प्रेसिंग पोजीशन डोमिनेंट टीम में नहीं खेला है. लाइक ही हैज बीन Correct. प्लेइंग वो Correct. वो इट है टाइम लगेगा बट एक तरीके से आई कैन सी द ग्लिम्प्स कि maybe not in this season but in next season you could see this guy Yeah. turning into much better version of what he is. Yep. But ये तूने आई थिंक जो नोटिस किया होने का जैसे मैंने नोटिस किया था कि for the initial couple of minutes I think so not just a couple of minutes even for the first half most of the part there was false nine even तूने like अगर तुम I don't know notice किया नहीं but Foden was playing false and Alvarez was playing bit deeper. किडी पेप ने बुला दिया उसे. पेप ने बोल दिया अल्वारेज को भाई तू स्ट्राइकर नहीं है अभी. आई थिंक उसकी वो चला गया है. उसका फंक्शन ही चला गया अभी वो स्ट्राइकरिंग का. I think he enjoys being more deeper than in like final third. That's what I got from that. He otherwise वो बहुत enjoy कर रहा है. As the Pep was like कि भाई इनकुंकू नहीं हुआ तो क्या हुआ अल्वारेज तो है हमारे पास. तो ये लाइक कि भाई वो प्रॉपर ऐसे एकदम बॉक्स के बाहर वाला स्ट्राइकर बना दे कि लाइक जस्ट बी ओवर देयर एंड हेल्प. बट आई थिंक फ्लेमिनेस के अगेंस्ट भी फॉल्स नहीं खिलाया था इवन दो अल्वारेज है. तो what I was looking to get an answer कि do we see that कि पेप अल्वारेज को प्रॉपर एक जैसे मैंने हैरी केन का तो एग्जांपल दिया था. Yes. कि why people always have this argument कि हैरी केन सिर्फ एक मतलब बॉक्स में पेलने वाला स्ट्राइकर ही नहीं है. ठीक है ना. he can even he's a playmaker. He can drop deep and receive ball and he can kind of carry the Yep. ball around. He can beat the press and do everything. So I mean is Pep seeing Alvarez like एक एक्सपेरिमेंट की जैसे कि यार मतलब मैं बनाएगा मैं अपना केन बनाएगा. I mean, क्या लगता है I don't think it's an experiment. I think वो पेप का प्लान है. I mean अगर हालैंड नहीं होता I think हम वही खेल रहे होते. For last year में वही खेल रहे होते. अभी वही खेल रहे होते. 100%. Yeah, I think that's what Pep thinks. Alvarez is that kind of utility player जो दोनों मेरे लिए कर सकता है and उसका ज़्यादा involvement. What Pep Guardiola's biggest football philosophy जो है keep the ball and वो सबसे ज़्यादा किससे आता है midfield superiority. Midfield में इतने ज़्यादा numbers रहेंगे उतना बॉल रहेगा and उससे हम ज़्यादा forward पे जा सकते हैं. Be it winger, be it midfielder, the way you can put in a front final third. But that's what the best part of having Alvarez is and that's a luxury for Pep Guardiola. I don't think वो experiment कर रहा है. I think उसने मान लिया है कि ये मेरा ऐसा बंदा है जो दोनों कर सकता है तो इसको मैं ऐसे यूज करूंगा. तो I'm not surprised to see false nine when Alvarez is on the pitch. I mean that's understandable. That's Pep. But the thing is कि but मेरे को ये ना एक तरीके से थोड़ा सा एक रेड फ्लैग जैसा भी लगने लग गया because thing is कि when you see him doing the whole antics when what a midfielder supposed to do, I could see that कि उसके बॉल स्ट्राइकिंग पे और उसके चांसेस उसके शॉट टेकिंग पे Yes. वो इम्पैक्ट उसका उल्टा पड़ रहा है. I agree. I completely agree with that point. Yeah. तो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और बनाने के चक्कर में जो वो था वो भी उसे छीन ले. You know I what mean, I'm saying? I got what you're saying, but just to add to that, I think this story will be different when KDB is in the team. I think when you have a bit more of creativity in the team, I think we can expect Alvarez to be more into final third than what we're seeing him now. But we'll get to know about it जब KDB आएगा. But that's what I speculate कि because it could be that could be the thing. Maybe we'll see more of him in the final third जब KDB आएगा. But pata hai, speaking about Alvarez, just a couple of things about Alvarez. पहले तो and this is a nice stat which I've read that कि out of his 20 GNA which he had achieved this season, 15 of them have played an important role in getting City to level up. Basically, you're trying to say that कि Alvarez
is City's 2023 version of a clutch player. Yes. Yes. Like, do you agree with that? Ki Yes. Alvarez is basically a clutch player for the season as of now. This season, even last season तो है ही, but even last season, when you look at the games like Fulham 2-1, he scored the banger. Even Chelsea 1-0 जो हम जीते थे title, जिसमें he scored the winning goal. He has न्यूकासल scored वाला those गेम. goals. Newcastle वाला game, yeah, that was a banger. क्या goal था वो? I mean, he has scored those goals जिसने City को 3 points दिए हैं. So, I mean, he's definitely that kind of a clutch player जो जिसकी हम बात कर रहे हैं. I mean, in clutch you can add Rodri as well because Rodri has also given such moments. वो तो But बोनाफाइड क्लच है. वो तो मतलब yeah, there is no so two ways about it. yeah, but I completely agree with that. कि Alvarez is definitely that player. आई थिंक सो. हाँ, तूने एक चीज बहुत सही भी कही, जो जिसके लिए ना मैं भी थोड़ा एक्साइटेड या थोड़ा इंटरेस्टेड हूं टू सी दैट कि केडीबी आने के बाद इस टीम का क्या, लाइक इस टीम की Yeah. दशा क्या बदलती है. Also, तब Haaland भी और आएगा. That's also different headache. हालैंड आएगा भाई, डोकू आएगा, केडीबी है, ठीक है. तो इट्स जस्ट दैट कि यू नो दैट वी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट वुड बी सिटीज प्राइमरी प्लेइंग 11. प्राइमरी तो Yes. उस मोमेंट से पता चलना जाएगा कि प्राइमरी प्लेइंग 11 क्या है. Yeah, and in all this you cannot drop Alvarez. That's a different headache to have. कि तो Alvarez को कहाँ बिठाया? मतलब you cannot bench him now. क्या The way he's playing क्या and the way he's influenced the team. तो पता है, मैं ना बहुत सारे अनपॉपुलर ओपिनियंस ड्रॉप करने के लिए जाने लग गया अच्छा कि यार मतलब. तो उसमें से तो इस वीडियो का पहला अनपॉपुलर ओपिनियन मेरा ये है कि अल्वारेज का जो गेम टाइम का जो कोटा था ना, मेरे हिसाब से वो भर चुका है. अगर आज से, लाइक नॉट आज से, आई मीन अगर आप जनवरी में लेट्स से फॉर एग्जांपल में न्यूकासल गेम से अगर उसे बैठा दो बेंच पे and use him as a impact substitute to be the game changer, so it won't be problem because even from a like when Haaland होने के बाद भी वो खेल रहा है, तो like for like basically अब उसका ये हो गया कि अगर इंजरी किसी को होती है मिडफील्ड में, स्पेशली फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो है. हालैंड को इंजरी होती है तो वो है. एंड that was rule from the beginning, क्योंकि हम दो स्ट्राइकर तो नहीं खिलाते हैं. अब तो आप दो नहीं खेल Agreed. रहे, like Yeah. और हालैंड और केडीबी के जाने के बाद वी चेंज द फॉर्मेशन की, लाइक वी स्टार्टेड डूइंग अ 3-1 वाला सेटअप. ये हालैंड के पीछे तीन लोग रहेंगे rather than the 2-2-1 वाला सेटअप जहां पे और केडीबी एंड गुंडोगन यूज्ड टू सपोर्ट टू विंगर्स, और वो दोनों विंगर्स हालैंड को सपोर्ट करते थे. तो केडीबी आने के बाद अब ये शायद सेटअप नहीं चले, तो हो सकता है मेरे हिसाब से अल्वारेज माइट बी बिकॉज यार 6 महीने कंटिन्यूअसली खेला है, which for me That's what. kind of is it's to the brink जहाँ पे उसका गेम टाइम इतना है, ठीक है. Like right from the beginning he knows for the fact that कि वो हालैंड का he will be second to Haaland, ठीक है. Yes. And he got to play almost every game till now, and especially और एक दो गेम और भी बचे हैं, which is I think so for enough for someone who और प्लस आगे भरोसा नहीं है भाई, इंजरी किसी को भी हो सकती है midfield में, ठीक है. It's not that कि भाई बिल्कुल ही ना खेले कल को, अगर इफ बिकॉज मैं जो आगे सेगवे करने वाला हूँ तो मैं उसका उसी में आई एम काइंड ऑफ रशिंग इनटू इट. बट जिस प्लेयर की बात मैं करने जा रहा हूँ, अगर वो कंसिस्टेंटली से परफॉर्म कर रहा है तो उसको ड्रॉप करना वुड बी अ मच वर्स देन अल्वारेज को ड्रॉप करना. और जिसकी बात कर रहा हूँ वो है फिल फोर्डन, एंड that's the title for me, Foden Trial FC. The Foden Trial is basically that's the video title. think so हमने वीडियो का टाइटल ये होना चाहिए, ये रखना चाहिए. Yes. रखना चाहिए. Not so I think the Foden Trial FC is apt for the second half, ठीक है. अगर सेकंड हाफ का टाइटल दिया जाए तो इसीलिए बिकॉज एक तो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस स्टैट जो अभी ट्विटर पे काफी चल रहा है, दैट इफ फोर्डन गेट्स टू हैव मोर देन 70 touches in a game in midfield, City has won almost all of these games. Like that is a short win for City, and Foden also gets man of the match. So, and I think so that's the key, क्योंकि एक ये आई टेस्ट भी, लाइक जो आपका जो आपने एक तरीके से स्टैट बेस आपका आई टेस्ट था,
वो भी आपको सपोर्ट करते हैं विद द फैक्ट दैट कि फोर्डन नीड्स टू बी मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड. Yes. Yes. तो तुझे ये दोनों हाफ्स के जो फोर्डन है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाला, जिसमें ऐसा क्या मेजर डिफरेंस दिखा कि कि सेकंड हाफ में एक लाइक फोर्डन became that guy who took the responsibility in second half. तो तुझे ऐसा Yes. क्या लगा shift कि like कि and I think so because I think so we were chatting about in between games जहाँ पे तूने कहा था कि I think so Foden शायद second half में would be the guy who would take the responsibility. तुझे ऐसा क्या लगा कि Foden responsibility take the second half? Like why did you say that? See, I mean, you can use a logic for most of the player in the team because first half में अलग थे, second half में थोड़ा better performance हमें दिखा. But what I'll add to this is कि Foden से we expect more shots, because he's capable of doing converting those shots. In first half, I didn't see much directness from his game, though he was. I don't think he was bad in first half, but he was not our best player in first half. But still, उसमें वो ball keeping ability है, वो turn कर सकता है. He can keep the ball, he can move ahead. But in second half, that because जब अपने goal नहीं आते, when goals are not coming, these are the type of goals जो out of nowhere आते हैं and which requires quality, perfection, execution वो चाहिए. That Phil Foden showed in that goal, and that goal gave us the boost कि भाई चलो 50 minutes now it's time to we have enough time to get another goal and get those 3 points. So he has that quality of what you say like on He's a field game changer. अपना place leadership. He is a very intelligent player and उसमें leadership उसमें वो on play leadership है कि भाई मैं करके score करके अपने टीम को आगे ले जाऊंगा. So that's good to have in a team कि when and especially when हमारा midfield में he is only the most advanced creative player when you see Gundogan and KD भी नहीं है and Bernardo is mostly on the right wing. So उसके ऊपर ज़्यादातर creativity की responsibilities है, ज़्यादातर goals and responsibility उसकी है. And as you said कि 70 touches उसके होते हैं midfield में, that shows कि उसका involvement game में कितना है and that is giving us results. As you said, he hasn't lost. I guess he has won every game, right? And he has been man of the match in Almost most of every them. game. Almost every Yeah, game. Like मतलब that's a stat. एक Clean गेम stat. ड्रॉ हुआ होगा, एक गेम ड्रॉ हुआ होगा. Yeah, that's what I'm saying. He has that quality, he has that mentality. I think he need to apply that more. I don't think first half में उसे इतने chances मिले to get that clear cut hit on a goal, but that goal man, that goal and also that end में जो उसका post लगा था, that was just हाँ, crazy. उसने out of nowhere अरे क्या shot मारा उसने. I'm like उन्हें कहाँ से मारा? उस But it did come from. आई थिंक सो इसका पिकफोर्ड का कुछ तो लफड़ा है भाई. मतलब आई थिंक सो वो पिकफोर्ड को बहुत लताड़ता है यार. कुछ तो लफड़ा है इसका. Seriously, that कुछ was कुछ what a है. banger that was. क्या banger था वो भाई out of nowhere. तो लाइक दिस इज जोक्स अपार्ट, पता चल रहा है इसका भी कोई केटीबी कोर्तो वाला लफड़ा निकल जाए पिकफोर्ड के साथ. क्या क्या पता. पता भाई. ऑलरेडी कांड कर चुका है वो ग्रीनवुड के साथ बाहर, तो क्या पता भाई. कुछ भी हो तो सकता है. अगर so basically if I talk about the goal, पहले सबसे पहले तो I would like to say कि यार Bernardo Silva did the most Bernardo Silva thing by drawing Yeah. Harrison Harrison और मैकनील को जो उसने अपनी तरफ ड्रॉ किया था, then he made the pass to Foden and Foden Yeah. भाई 25 यार्ड से जो उसने सीधा अपना कट इन लेफ्ट फुट पर कट इन करके जो उसने एफर्ट जो उसने शॉट लिया है पिन भाई. पॉइंट परफेक्ट पिन पॉइंट था वो टू द नियर पोस्ट. there is a film जिसमें I think so I don't remember, there's this film जहाँ पर डायलॉग था कि ये तो घास पे ऐसा मारेगा तो टर्फ पे क्या करेगा सर, नेट फाड़ देगा. तो भाई उन्होंने नेट फाड़ दिया है भाई एकदम. Nice. नेट फाड़ दिया. Correct. I think Everton players were also a bit shook after that goal कि what just happened. क्या आ गया कि क्या था. They were not expecting, I guess. Yeah. क्योंकि Even Pickford हाँ. जो who had the best game Pickford हर एक चीज सेव कर रहा था भाई. इवन उसको नहीं समझा कि कहाँ से आ गया ये शॉट. Pickford का हाँ, I mean props to him. I think so Pickford for me was the best player for Everton. Yeah. Yep. बहुत उसने बचा के रखा, वरना this could have been a very comfortable good 4-5-1. Yeah. I think so for me. Yes. और अब फोडन का जहां तक मेरा आउटलुक है मोटा जैसे कि भाई बिकॉज ये ना ये खासकर ये सीजन आते तो ये सीजन में फोडन के लिए बहुत जरूरी था टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ Yes. इंटेंट दैट
it is high time that within City the conversation should begin कि क्या मेरे अराउंड अब टीम बननी चाहिए क्या, do I be Yep. the next superstar, uh, Yes. जिस जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट केडीबी जो बैटन लेगा, आई एम नॉट सेइंग कि ओके ये केडीबी की सक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केडीबी से टीम के इंटरनल बैटन लेने की बात कर रहा हूँ कि हर टीम में एक प्लेयर ऐसा रहता है जिसके आप आसपास पूरी टीम बनाते हैं। आज केडीबी वो प्लेयर है जिसके आसपास आपने पूरी टीम बनाई और उसके बाद आपने प्लेयर्स उसको ऐसे दिए जो उसको बेटर यूज कर सकते हैं। फोर्डन प्रॉब्लम फोर्डन थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स, जहां पे ही हैज लॉस्ट द बॉल इन डेंजरस Yep. एरियाज एंड देन दैट क्रिस्टल पैलेस वाला जो हाउलर था जिसके चक्कर में अनफॉर्चुनेटली पॉइंट्स ड्रॉप हो गए, Yeah. ठीक है। तो but then दिस वन आई थिंक सो, मतलब कहा भी था कि बट इस मैच में फोर्डन ने ग्राउंड डुएल्स 7 में से 5 जीते, एंड देयर वाज एन Yep. इंटरव्यू वेयर ही सेड गार्डियोला इज डिमांडिंग more defensive actions from his midfielder. I think so. I have to improve that to nail my place in the squad. So these stats also kind of show that कि भाई मतलब he's very serious to just be in that starting lineup for maybe for a week in week out. तो ये मेरे को लगता है कि this game kind of is giving like a statement of intent. अब यहाँ से ना consistency बहुत जरूरी है Foden के लिए. Like you do not have to be in a hot and cold player जो basically that will kind of tarnish his efforts, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक का अगर आप देखें तो बेस्ट प्लेयर की कॉन्वर्सेशन में फोर्डन इज इन द टॉप 2 and top 3 names, and Yes. and I have not अगर even the people who are watching they also hail Foden as the number one, and I think so it's high time कि आपको क्या लगता है कि अभी तक का सिटी का बेस्ट प्लेयर कौन सा है, प्लीज कमेंट्स में बताइए। व्हाट डू यू थिंक हु हैव बीन सिटीज बेस्ट प्लेयर टिल, बिकॉज़ आधा सीजन गुजर चुका है, we have finished game week 19, और अभी अब आधा सीजन और आने वाला है। तो आई थिंक सो फोर्डन, और इवन ऑन सोशल मीडिया एंड वेरियस पोर्टल्स पे डिबेट भी होती है कि क्या फोर्डन वो गेम चेंजर है, क्या उसने गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस दी है सिटी के लिए। तो उस ऐसा कुछ भी फॉर ऑल द फैंस हु आर वाचिंग, स्पेशली फॉर सिटी फैंस, अगर तुम्हें कोई आके पूछे कि फोर्डन की गेम की परफॉर्मेंस क्या है, तो ये गेम का चांटा जड़ना पहले उसके चेहरे पे कि भाई, और उसे बैठाना दिखाने के लिए, मेक उसे 90 मिनट मत देना जब तक वो गेम पूरा देखे नहीं, ठीक है। like make it like kind of tie him down the chair and make him watch the second half, even not the first half, watch the second half to Yes. kind of so that he can never say these things again to you, he or she, whoever says. So and he started from false nine, और फिर उसके बाद वो सीधा drop deep in the middle second half, so that also made change. So keeping Foden in central zones is very important. तो central spaces में जितना operate करे जाता उतना अपने लिए अच्छा, is what I feel. Yes. अब अगर मैं बात करूं वो पेनल्टी की, which जो भी नया कंट्रोवर्सी बन रखा है, और मतलब सिटी को कुछ मिले ना मिले कंट्रोवर्सी तो वैसे ही बनती है। क्या मतलब तेरा क्या थॉट है पेनल्टी का? And Bro, it was like be clear honest to God. penalty, bro. I thought it was penalty because his hand was above it. He was not in the right position. I mean, either way, वैसी penalty बहुत दिए गए. I mean, I was not surprised कि वो penalty. It was supposed to be a penalty, and it was an on-field decision. It was not even like VR decision. So I don't know why people are crying about it. कि VR ने भी हाँ बोलते थे, I just read पहले कि हाँ VR VR ने हाँ also बोला था, but no, it was not like कि decision turned हुआ है and then you can see turnover controversy. नहीं I mean, हुआ। it was a clear decision. It was on-field decision. On-field referee ने बोला, the sideman referee said कि it's a penalty. It's a penalty. VR checked. It was a penalty. I don't know why is media and why are all the, of course, haters want to hate, but at least hate logically. Why are they hating illogically? I mean, I don't understand. That was a clear pen. यार फ्रॉम अगर हम बाय द बुक जाए तो हाँ, बुक बहुत सिंपल है, हाथ शोल्डर के ऊपर था। Yeah. ठीक है, did he block that shot? Yes, that's it. But अब ठीक है, मतलब अगर ये कोई और ये समझ लो, अगर मैं काफी हिपोक्रेसी अगर उन लोगों की दिखाऊं कि जो क्लब के फैंस ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ डॉजी पेनल्टी, ऐसे डिसीजन सिटी को मिलते हैं, आई एम श्योर अगर तुम्हारे
जब तुम उस स्टेज में आते, फॉर एग्जांपल लेट्स से एनी ऑफ आवर टॉप 4 क्लब्स, अगर उनके साथ ऐसा होता ना, वो लिटरली इसके लिए धरना करने बैठ जाते कि कैसे नहीं। एग्जैक्टली ठीक है, तो एंड these type of penalties are given to teams, ऐसा नहीं कि we are the यस first ones, we are not the first ones. यस हाँ, I was saying something, क्या बोल रहा था? No, I'm saying कि ये ऐसा पेनल्टी दिया जाता है. I mean, if you remember 2 साल पहले, I think it was City Everton only, जिसमें रॉड्री का लग गया था हाथ और पेनल्टी नहीं दिया था. I was saying कि bro, it was clear penalty, वो हाथ में लगा है, ऐसे बॉल पेनल्टी दिए जाते हैं, अरे देना चाहिए, या इसमें there is no. भाई FA कप फाइनल ग्रीलिश दिया था ना यूनाइटेड को Yeah, पेनल्टी. yeah, exactly. वो ऐसा पेनल्टी मिला and there are people crying on this penalty. I'm like हाँ, crazy. How is that एंड even a debate? एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हें किसी बात पे रोना है ना, तो आई एम स्टिल फ्यूमिंग फॉर दैट लिवरपूल वाला, वो जो अकांजी ने जो एलिसन पे एकदम एकदम सॉफ्ट, वो जो था Yeah. बहुत ही सॉफ्ट कॉल, Oh, bro. हमें वो नहीं दिया है, तो मतलब Yeah. वो देते तो समझ में आता कि चल ठीक है, दैट कुड हैव बीन लाइक Yeah. 50-50 But वाला हिसाब. बट अगर मैं इस पेनल्टी की बात करूं तो एक समझ में आता है रीजन कि भाई डेलिबरेट नहीं था, ठीक है, मान लिया कि वो डेलिबरेट एक्शन yeah. नहीं था. उसके बाद टाइम नहीं था. I can understand that as well. कि space कम था. I can still understand that well. But when you go by the हाँ, book, it has या to be a बाय द penalty. बुक, एग्जैक्टली लाइक या तो फिर हैंडबॉल, या तो हैंडबॉल क्या है ये बताओ, क्योंकि ये सीजन में Yeah. किसी को नहीं पता हैंडबॉल क्या है, That क्या rule has हैंडबॉल है very क्या नहीं, ये किसी को unclear नहीं rule है पता वो है. अब तक. Yeah. Correct. बिकॉज आई रिमेम्बर पोस्ट मैच में, आई डोंट पैनलिस्ट कौन था, एंड बिकॉज दैट वाज, वो एक्सप्लेन कर रहा, वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि डेलिबरेट तो नहीं है ना, एंड ही वाज सेइंग कि अगर हाथों लेवल पे था. सो फिर आई थिंक सो डर्मोट गालेगर को बुलाया, मैंने बोला, जब मैंने देखा उस आदमी का चेहरा, मैंने बोला कि यार ये किलसेगा, ये मना ही करेगा, बट देन ही सेड दैट कि भाई बुक के हिसाब से तो पेनल्टी है, और उसका Yes. हाथ, उसने बोला कि उसका हाथ लेवल पे नहीं था, हाथ ऊपर था. ठीक है, Clearly ऊपर था हाथ bro. It सर तक was. पहुंच चुका था, हाँ, सर तक पहुंच चुका था हाथ उसका. बस बोला कि भाई उसने Yes. कहा था कि अगर वीआर भी इसको ओवरटर्न नहीं करता, बिकॉज बाय द बुक इट इज अ पेनल्टी. Exactly. एंड बट देन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि कंसिस्टेंसी कहाँ है, मतलब हाँ देख, पर कंसिस्टेंसी किस डिसीजन में है, किस में कंसिस्टेंसी हो रखी है. ठीक है, माना कि भाई वो यूनाइटेड वाला गेम जो स्पर्स के अगेंस्ट था, उसमें रोमेरो वाले में नहीं दिया, ठीक है, मान लिया, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोस डिसीजंस में कंसिस्टेंसी नहीं है. ठीक है, जो हम लाइक देयर आर ऑल लाइक देयर आर ऑल, आई डोंट थिंक देयर आर एनी रूल जिसको बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो किए थे सीजन Yes. प्रीमियर लीग में. और अगर हम प्रीमियर लीग रेफरिंग की बात करो, एक तो मैं एक चीज और है, लाइक अगर तुम ये बोलते हो ना कि लाइक सिटी के अगेंस्ट सब, सिटी के फेवर में सब जाता है, टेल मी दैट ग्रिलिश वाला फाउल वो कहां से कार्ड वाला, तो कहां से कार्ड था जो राइट मैकनील पे किया था. Yeah. I mean, this refereeing discussion. I mean, we had discussions. We are having this for last I don't know how many years. पर ये चलते जाएगा. Sometimes you have it, sometimes you don't have it. And this time, ज्यादा ही हो गया ये, दिस सीजन yeah, हैज बीन लाइक ऑन डिफरेंट लेवल. yeah. But I mean, my point being कि कभी डिसीजन तुम्हारे फेवर में रहेंगे, कभी तुम्हारे फेवर में नहीं रहेंगे. That's the game of it. But in this case, it was a clear penalty. There should not be a debate. There are people who are questioning कि ये controversial. I don't think it's controversial. That's I think out of order, man. हाँ, That's a clear penalty. I mean, और थोड़े भाई, उससे better चीजों पे controversy निकालो भाइयों. I mean, इस पे मत एंड द निकालो. थिंग इज रेफरिंग हम लोग के फेवर में नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फाउल्स दैट हैव नॉट बीन गिवन टू एवर्टन. Yeah. माइकोलेंको ने क्लियर फाउल ऑन ग्रिलिश, उसको कार्ड नहीं दिया. उसके बाद Yes. और Yes. और मैकनील वाले पे तो वो गिर गया खुद, मतलब ग्रिलिश फेल डाउन, वो तो उसने चैलेंज भी नहीं किया था, उसको कार्ड दे दिया. Yes. Yes. Everton, I think so Everton players were being too physical on our players, and a lot of them Yeah. have escaped cards. I mean, Yes. Yes. मतलब ऐसे नहीं तो वैसे they balance it out. But ये कि penalty was clear. Yeah. I think it's a stonewall penalty anyway. Like going, Yeah. and I keep the book over anything else as of now, because कोई definition तो है नहीं Yeah. कि handball क्या है, handball नहीं है. Uh, you know, but since you're talking about the good things, let's talk about the bad thing as well, which is the goal that we have conceded.
क्या कहना चाहेगा, मतलब I mean, what is the first that came into mind when you saw that? see, I mean, we all want And us to be a. before you say anything, Brighton scored against Tottenham. Oh, I'm just watching it and it's. As I saw that Brighton scored against Tottenham. Ooh, what a finish! What a goal! Yeah, this is शायद debut है इस बंदे का, Jack Hinselwood. 41. इसका debut Oh, भाई, Hinselwood. Hinselwood भाई, Brighton की भी बहुत इंजरीज है, Brighton have an injury 11. I सारों में mean, तो वहाँ okay, पे गया ना. so you're telling me this is तो ये बंदा अगले साल 120 मिनट में जाने वाला है कहीं तो भी ऐसा चेल्सी चेल्सी वो है ना, चेल्सी 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 ही तो वो क्लब है जिसको हर क्लब स्कैम कर सकता है, कौन है? ओ वाटर प्ले ब्रो, वाटर प्ले. तूने रिसेंटली यूपीआई वाले एड्स देखे हैं, जो पंकज त्रिपाठी के यूपीआई वाले एड्स आते हैं कि कहीं से गुलशन ग्रोवर आ जाता है, कहीं से सुधा चंद्रन आती है कि बेचने के लिए कि इस लिंक पे क्लिक कर दे, पीछे से उसका ऑल्टर ईगो आता है कि क्या कर रहा है. थिंक सो इसमें ऑल्टर ईगो नहीं है. लाइक ऑल ऑफ दीस क्लब्स अदर गुलशन ग्रोवर थे जो चिपका डालता है, चेल्सी ले लेता है. Yes. हाँ, but coming back to goal conceding. Yes, goal conceding. Yeah. So all a City fan wants us to be Premier League champions, and to be a Premier League champions, I think your defense need to be solid. It needs to be astute. Yeah, we have that to goal was and that goal was, I won't say defensive error. It was an individual error जो होती है, but you cannot let it happen many times. अब ये बहुत बार हो रही है. You can see कि चले होता है, ठीक है, but अभी ये बहुत बार हो रहा है तो भाई ये नहीं चल सकता है. At one point we have to solidify ourselves because Premier League winning teams have a good defense. They have clean sheet record. उनका भाई clean sheet रहते हैं solid. They are the teams जो 1-0 ऐसे tight 1-0 2-1 निकालते हैं. और अभी तू नहीं पहले बोल दे भाई कि 2-1 हमको डर लग रहा है भाई कि 2-1 है और कि भाई हम गोल खा सकते हैं. That should not be a champions team का mentality. So this is where I think we need to start thinking about defense as well. Chances creation एक question था जो थोड़ा better हो गया है, but chance conversion issue है. But ठीक है, Haaland आ जाएगा, then we think okay better हो जाएगा. But till the time you don't have a solid defense, till the time you don't stop conceding these stupid goals, प्रीमियर लीग टाइटल ऐसे चला जाएगा भाई. ऑफ कोर्स हम टाइटल से बात करने वाले हैं, बट जब वेन्यूसी आजू-बाजू वाली टीम्स जो आगे बढ़ती जा रही है, सिटी ऑलरेडी एक गेम पीछे है बिकॉज़ ऑफ क्लब वर्ल्ड कप, एक गेम कम खेले हैं, सो वी डोंट इवन नो उसका रिजल्ट क्या रहेगा एंड ऑल. सो वी हैव टू focus on defense and make sure कि ऐसे mishaps ना हो in the out of nowhere ऐसे mishaps ना हो where give the goal to your opponent. So जब इनिशियली मुझे पता चला कि बेटो विल फेस अकांजी, तो मैं तो मेरे मन में उसका एक गोल मान ही चुका था कि भाई ये तो वहां मन में ले लेगा 100%. बट इन सेकेंड हाफ व्हेन एंड बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय, बट उससे पहले मैं जो प्रीलूड दे दूं कि सेकेंड हाफ में जब स्टोन्स गॉट इंजर्ड, जब आई मीन फर्स्ट हाफ में इंजर हुआ था ना स्टोन्स, फर्स्ट हाफ में. यस तो जो स्टोन्स इंजर हुआ उसके बाद देन गार्डियोला डिड व्हाट ही वाज डूइंग फॉर द एंटायर सीजन कि वॉकर को आगे लगा दिया राइट विंग पे, मतलब टू अटैक, एंड देन so आके played in the center and then Akanji became that man. तो एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, एंड आके डिड वेरी वेल अगेंस्ट बेटो. द फैक्ट दैट कि बेटो को सब करके कैल्वर्ट लोवेन को लाना पड़ा. तो आई थिंक फॉर द फैक्ट कि भाई एंड वही वाली बात है बिकॉज़ हमारा डिफेंसिव बैक फोर फिक्स ही नहीं है ना. हम 3-4 गेम बिना बैक फोर के नहीं खेलते हैं. 3-4 गेम एक बैक फोर खेलेगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा, फिर दूसरा कोई आ जाएगा. तो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर दिस टीम एंड इज आई थिंक सो इन दिस फर्स्ट गोल दैट वी कंसीडर्ड. एक तो अकांजी, मैं हमेशा तो बोलता हूं अकांजी फॉर मी इज लाइक अ हॉट एंड कोल्ड प्लेयर. ठीक है ना, चलता है तो चांद तक, नहीं तो साला शाम तक भी ना चले. फॉर मी इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ठीक है, मतलब कहते ना लाइक एक चाइनीज मोबाइल वाला प्लेयर है. चल गया तो भाई चल गया, जैसे लिवरपूल वाला गेम ले ले, मैं चल गया और गेम में चल गया. ठीक है ना, थैंकफुली
और नहीं चलेगा तो नहीं ही चलेगा। तुम कुछ कितना भी कुछ कहीं भी उसको आड़ा टेढ़ा इधर उधर कहीं भी फेंकवा दो, वो कुछ ना कुछ करके मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा। तो एंड you know a lot of them have said that Akanji is more of a system defender, which is true. But in this goal particularly, I thought Akanji failed to see where Bernardo Silva is, और उसको ऐसा पास दिया कि भाई वो बॉल ही हैंडल नहीं कर पाया। फिर ड्वाइट मैकनेल Yeah, बॉल ले गया and he drove past, and then I think so Rodri tried to dispossess him, but then he lost control as well, and then that he gave a low cross this और फिर is भाई फिर and the ironic part in the whole thing is कि हमारे अगेंस्ट गोल भी किसने स्कोर किया? yeah our guy Jack जैक Harrison. हैरिसन, ex ex CFG player, I mean इसको सिटी प्लेयर Yes, नहीं बोल सकते, ex CFG player। I mean There's he has played for us in some friendly like preseason friendlies, but ठीक है, that doesn't this is count. the story भाई, this is the story। स्टर्लिंग स्कोर कर चुका है, पामर स्कोर कर चुका है, हैरिसन Wow. स्कोर कर चुका है। अगर कोई पुराना प्लेयर किसी पे खेल रहा हो तो मान लो कि वो एक गोल तो मारेगा ही मारेगा। ये तो इस मतलब सीजन की कहानी चल रही है। जीसस और जिंचेंको के बचे गोल, that's what you were saying then, मतलब हाँ आर्सेनल वाले बस वो गेम में भी बच्चे, गोल हाँ वो जिंचेंको but असिस्ट किया, नॉट गोल। जिस तरह से चल रहा है सीजन, आई मीन वी नीड टू काउंट दैट गोल एज वेल नाउ कि ये भी गोल तो होने Yeah, वाला है। you cannot discard it, you cannot discard the possibility of that happening in one way or Yes the sir. other। ठीक है, Yes. और ये सारे सेलिब्रेट भी कर लेंगे दोनों, ऐसा नहीं कि दे विल बी वेरी Yeah, रिस्पेक्टफुल yeah, yeah. अबाउट I इट, mean, ये कर लेंगे भाई। तो and also for the fact that this is, I just want to put one more part, I think so Rodri, where by the way sofa score gave Rodri 6.6 7.6, जब कोई GNA नहीं था, he lost the ball couple of times, so I mean that presence is very important, and yeah, yeah, that's Rodri, true. since we're talking about Rodri, there is a fact that this is his 48th game unbeaten Yeah, now. I think so the highest, either one of the highest or the highest in Premier League till now. yeah. So you know how That's important he is that's to mad. every. That's very mad stat, bro. 48 का streak, unbeaten. I mean, crazy. That shows कि I mean, how important that player is. भाई न्यूकासल वाला गेम जीत ले तो उसके हाथ में बैट दे दो यार, वो पूरे स्टेडियम में साला ऐसे एकदम हाफ सेंचुरी वाला जो नहीं करते क्या? एक पापा क्रिकेट बैट दे दो भाई, अगर जीत गए तो वो पापा एकदम इसे दिखाते हुए जाएगा अवे फैंस को। I think so, yeah, he deserves that. So, and when Fluminense वाला गेम के बाद भाई everyone was concerned, including me, कि यार यार साला इंजरी हो गया है, long term पे Yeah, दिक्कत true. होगी। But then nothing happened thankfully, and he like he was playing as a regular player, कुछ उसने मतलब लंगड़ा लंगड़ा के नहीं खेल रहा था या पेन किलर्स वाला हिसाब में दिख रहा था, but I mean hopefully he stays fit आगे भी। uh, अब to kind of have a last say on our game, जिसके लिए तू बार बार पुचर रहा है कि टाइटल रेस है, टाइटल रेस नहीं है। मैं से पहले मेरा पॉइंट बोल देता हूँ, उसके बाद ओपन द फ्लोर टू यू। मेरा पॉइंट ये है, बिकॉज मैं पहले अपना एक कंट्रोवर्शियल अगेन सेकंड वर्जन ऑफ माय अनपॉपुलर ओपिनियन जाहिर कर दूं कि मेरे लिए तो अभी नहीं है, बिकॉज अभी एक गेम जीते हैं, ठीक है ना? ये हंटिंग सीजन एक गेम में नहीं बनता, ऐसा ना हो कि भाई तुम 3 जीत गए फिर ये गोइंग बैक टू द बिगिनिंग। सो आई वांट टू सी दिस थिंग हैपनिंग ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल। भाई आगे शेफील्ड है, पहले शेफील्ड जीतो, न्यूकासल है, Yes. न्यूकासल जीतो, उसके बाद जो तुम्हारा फरवरी से जो रन आएगा ऑफ गेम्स, व्हिच फरवरी से लेके सीधा अब जो चलेगा वो मई तक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। That is the most intense part, the final leg of your season, जहाँ पे you have to pick your pace. So whether you can like do the whole thing again, and because अगर इस बार भी कर लिया honestly, and इस बार भी somehow if we win it from next season, चाहे हम लोग कितने भी गंदे फॉर्म में जाए ना, no one will even think कि ये साले ये they are not the same anymore, because then they're like कि ये ऐसे फॉर्म में रह के भी जीत गए। Yes. And Yes. in 2021 season, by we were eighth, and then we won the title. So I think so. If we do the Exactly. same thing again, That's because that's what's gonna be my because for the point. Yes. because for the fact that कि इस गेम ये गेम के बाद
everyone expecting कि तुम लिवरपूल से 12 पॉइंट पीछे हो सकते हो, and that would kind of, or like that is basically put you in the worst position to come back for title race and everything. But it's reality is different, I think so. तो मेरा ये मानना है कि टाइटल रेस अभी प्रॉपरली अगर आप बोलो कि हाँ ऑन है, सिटी इज इन टाइटल रेस, I think so we need to have a couple of more games. We need to kind of sit tight, how, watch them how they perform, and let Yep. them develop that bank of winning runs, so that then they can start to build it on, and हो सकता है कि फिर again we do what we do the best वाला हिसाब इस तरह से. Yes. So that is what I believe. Now the floor is all yours. कि तुझे क्या लगता है कि I mean, what is your take on title, yeah. especially City's inclusion in? Just before I speak, I think there is potential penalty for Brighton. अरे ये बात I don't think so. That's a penalty. I think उसके पैर को लगा है. But he's checking VAR. I'll have to see it again. But yeah, should we wait for the penalty or should we continue on the topic? Because it's interesting. So yeah, we can wait for a little bit, चलेगा. But ज़्यादा टाइम लेगा तो भाई फिर नहीं चलेगा. No, as typical VAR does, but okay, I think that angle is such a bullshit angle. लग रहा है क्या? तो मैं तो That's a penalty. Oh my god. He gave a penalty. एरिया. Yes. मतलब I don't know which angle मुझे दिखा नहीं. I'll have to see it again. But he gave a penalty. But okay, he will take time to take the penalty. हाँ, तब तक I'll just give a point on the title race. Yeah, I mean, see, we are one game behind, and we are obviously I think 4 or 5 points behind. If we win, तो वो 3 वो match आ जाता है. So we are in the race. I won't say that. I won't discount that. Good thing is that what we discussed on Club World Cup के बाद कि once you win the trophy, it gives you a different boost to you. Team morale आ जाता है, and वो उस morale पे City का team हमको है, and that's what give us the Everton win. Let me just pause it for a second because João Pedro. Is João Pedro right? Yeah, he scored. Yeah. In the words of Mr. Expressions oozing, and the stream, Dave, and the stream blood. Oh my god! Also, that João Pedro did the Rashford celebration. Did you see that meme? That this season everyone is doing the celebration and except Rashford. Everyone is doing Rashford except and he just did that. As like Holland भी कर लेता तो कितना सही रहता. That would have been ironic. That would have been ironic. But just to be on the point, yeah, once you win the trophy, that builds your momentum, and that's what I did. कि भाई अभी momentum build करो. As you also said at the start में कैसे भी करके 3 points लाओ. 3 points आगे है, अच्छा हुआ है. Sheffield, I think Sheffield should be the nailed on 3 points for us. Home पे है, team 20th है, and उसका हम आगे बात भी करेंगे. But this should be nailed on. So then you have 2 games winning streak. उसके बाद then you have Huddersfield, which in FA Cup, which you expected to win. Then tough game against Newcastle. That's where you have to be ready and you have to get those 3 points, build your momentum. Once you get into this phase, and as you also highlighted that 2021 season 8th से हम आगे गए थे, वो यही period था January वाला. Chelsea, United, then another FA Cup match, then you go on a streak. I think we are at the position now. Of course, there are a few flaws in our team which we can rectify and we can improve on. But more Haaland आएगा, KDB आएगा, Doku आएगा, City की team और galvanized होगी. We can hope more, but I think अभी title race के लिए I think this is the time where we should be picking up points and we should be more consistent on the long run. So I think so that is why we have covered almost everything on Everton game. So at the end, all we have to say that it's a must-win game. We got the 3 points. मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि 3 पॉइंट लेना जरूरी है, कैसे भी लो, ले लिया. You could really see that कि जिस सिटी को हम इतने साल से देखते आ रहे हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है, सेकेंड हाफ में वो देखने को मिला. But it's just that कि ये सिर्फ second half तक limited ना हो. We would like to see that consistently week in week out.
in both the Yes. half, not just in one half. एक पूरा गेम एक fully dominated रहे वो गेम देखने की काफी इच्छा है. And I think so the next game that we're going to play, I think so यहाँ पे शायद we could see City having complete domination over the Yes. game, just one half. I mean, at this stage, all we can hope because our next game Yeah. is against Sheffield United. This is this Home is where game you है, don't want ठीक है? this is where you don't want a tale of two halves, episode 8. This is where you don't want that. Correct. I mean, at this point, अगर ये हो गया तो that is That is equivalent concerning of then. Yeah, that is concerning. Yes. then you have a proper rant. I think so. Then Yeah. then it that warrants a rant. ठीक है? Yes. इतने टाइम से बचा के रखा है कि बिकॉज वो जो 6 हफ्ते का किल्लस देखा है वो फटा नहीं है, वो पता चला इसी गेम में फट जाए. तो before we move on with this game, I think so I would like to मैं एक बार टेबल पे नजर डाल लेता हूँ कि अभी तक की क्या कहानी चल रही है, बिकॉज वो बहुत जरूरी है आफ्टर एवर्टन गेम. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, तो ये है भाई साहब अभी तक की जो स्टोरी है. लिवरपूल टॉप पे है 42 पॉइंट्स पे. आर्सेनल उनका जस्ट अभी गेम शुरू होने वाला 15 मिनट में. अगर वो जीत जाते तो वो टॉप पे आ जाएंगे, और अगर वो ड्रॉ करा देते हैं या हार जाते हैं तो दे विल रिमेन इन द पोजीशन. सिटी come इज on, ऑन Pakweta. 4. Come on, Pakweta. भाई Get hope for that. पकवेटा कुदूस बोवन हमारा वाटराउस टिकाना फलाना ये ना वो ना सब कर लो भाई आज बस. ठीक है, आज भाई मतलब ड्रॉ या हराओ यार इनको. ऑनेस्टली लाइक Anything ठीक will है, do. मतलब एनीथिंग विल डू. अ ड्रॉ और Yeah. a West Ham win or a draw, but a Yeah. West Ham win, I prefer West Ham win. Of course. Of course. सिटी की बात करो तो वी आर 4th राइट नाउ. ठीक है ना, हम वी विल बी पोटेंशियली अगर अगर आर्सेनल जीत जाते हैं पोटेंशियली 6 पॉइंट्स बिहाइंड देम, तो व्हिच फॉर्म एंड विद अ गेम इन हैंड. Yeah, with तो the game. मेरे लिए we are in a better, we are in not in a, like इतना खराब पोजीशन नहीं है. We are Yes. still in it. Okay, like Yeah. वो जो 6 हफ्ते के बाद जो हॉरर्स देख के लगा था कि you know we are slipping down continuously. I think so we are. Yes. Is it does not look as bad as it might. So Yeah. I think so, yeah. I think so. That's we can still build upon it. But ये है कि अगर यहाँ से गलती से बॉटल करना शुरू कर दी तो फिर कोई नहीं बचा सकता. फिर you know there is this, yeah, I remember this one quote in the film कि आपको कोई नहीं बचा सकता, ना भगवान ना इंसान. तो और अगर मैं शेफील्ड की बात करूं, थोड़ा स्कोर स्क्रॉल करना पड़ेगा शायद से. हाँ, अभी हाँ, ये रहा. तो शेफील्ड के लिए मतलब टेक्निकली अ विन वुड कैटअपल्ट देम टू 19th, मतलब रेलेगेशन में तभी भी रहेंगे. सो बेसिकली द गेम मैटर्स मोर टू अस, Yes. क्योंकि ये तो इनके लिए तो मतलब ड्रॉ भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, हार गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो ये Yep. है टेबल की स्टोरी दैट अगर हम जीत जाते हैं कल का गेम, हाँ कल का गेम अगर हम जीत जाते हैं तो विल बी एट 40 पॉइंट्स एंड वी कैन, आई थिंक सो हम लोग वी कैन एट दिस from the look of this table we can be at, oh yeah, we can be second, yeah we can be at, no I think so we'll be at third, We yeah, can we'll be be a at third. third. We can be a third. Yeah. Apologies for my miscalculation, we'll be at third. And again सेकंड, वो सेकंड वाला जो स्पॉट रहता है ना कि यार फर्स्ट तो सेकंड वाली जो आदत है, तो थर्ड थोड़ा जल्दी निकलता नहीं है. तो या सो दिस इज हाउ टेबल लुक्स. आई थिंक सो अगेन प्रॉपर 3 पॉइंटर एंड दिस इज अ गेम वेयर आई थिंक सो जो मोमेंटम के लिए जो जरूरी है, तो ऐसे गेम से आपके मोमेंटम बनना शुरू होता है. जो आपने एवर्टन के अगेंस्ट Yes. स्टेटमेंट बताया that Yes. you are world champions and as Guardiola said, doubt us, we'll see. Yes. Yes. So जो आप कहते हैं ना जैसे अब चौड़ में जो आ गए हो अब तो उस चौड़ को आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा. यू हैव टू शो इट ऑन फील्ड.
तो Yes. ये गेम आपके लिए आई थिंक गेम बहुत सही Even टाइम पे आया. even that third goal is a statement, bro. That Bernardo Silva third goal is a हाँ statement in itself. You can't make mistake in front of us. If you make that mistake, we'll punish you. That's the statement we need to continue in this game. हमको continue करना है इस game में. करेक्ट. अब इस गेम को लेके अब मैं There are थोड़ा ना few इंफॉर्मेशन stats. देता हूँ. Yes. Yeah, it's only one, not few. There's only one. There are two of them. One is basically about that there are four games that has been played between City and Sheffield at Etihad. अब दो साइड उसमें ये है कि एक तो आज तक शेफील्ड ने जीता नहीं. So basically, Yep. three of them have been won by City. One ended in a draw. And second thing about this stat is that Sheffield has never scored at Etihad Stadium. Yes. तो आई थिंक सो अगेन जैसे मैंने कहा था कि स्टैट्स बहुत रोजी पिक्चर पेंट कर देते हैं, बट फील्ड पे क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा. By the way, there's also one more stat. It is interesting stat, but so Man City have lost their final game of a year only once in last 22 years. And जो एक गेम हारा था वो था 2016 में. याद है तुझे? नहीं शायद It was against Liverpool 1-0. It was New Year's party. I remember that game. We all lost to Liverpool. Wijnaldum had scored that goal. तेरा कोई ना कोई मेमोरी होगा, मुझे पता ही था कि तेरे को याद है, मतलब कोई ना कोई तेरे से. It was New Year. I remember it was New Year's. Now when I read it, I remembered कि वो New Year's की बात है. And there was the one game that we lost, the last game of the year in last 22 years. So that's also a very crazy stat to have. कि पिछले 22 साल में हम एक ही आखिरी मैच हारे हैं. अच्छा हुआ 7 साल में ऐसे ये दिन खराब करने के लिए कोई गेम नहीं. ये सही है. वो अच्छी बात है. वो अच्छी बात है. And hopefully कल का भी वो गेम ना रहे. Because let me remind you again. We were winning 1-0 away and they had scored 1-1 in 80th minute. और रॉड्री का गोल जब मारा था 2-1 जीते थे. This season, if you remember that Rodri had scored a late winner with his left foot. और That was Sheffield United only. मैं बात को जबरदस्ती नहीं लाने वाला था, बट ठीक है, since you said No, just to remember कि भाई कि we know we are outright favorites for this game, but it's football eventually. We just don't want the same thing not to happen again. जो हम जब बात करते आ रहे हैं. Let's hope it doesn't happen tomorrow. But the key thing is जो talk about the injuries and suspensions, that apparently Sheffield, and this is a big blow for Sheffield, by the way, that Anil Ahmed, I have to look up his spelling, by the way. So, what did you just say? that's actually his name. Sorry, I can't say. अब उसका कोई अलग pronunciation होगा तो मैंने किस दा, but that's how it's said. Sorry, who is suspended? Sorry. But that word has two. That word has another meaning as well. I mean, No, other sorry. relation Who suspended? Who suspended? Sorry. Please, can you repeat? Yeah, I'm gonna repeat it. Just give me a minute. ना मैं इसका पूरा pronunciation देख लूँ. Yeah. Right. And of course, we'll have to touch upon the injuries from City as well. But Anil Ahmed Hodzic. Yeah, what is it? I don't think that is the pronunciation, but That it is. I've just मैंने Google का translate पे सुना है वापस से कि यही है ना. Okay, fair play. And Gustavo Hammer, both of them have been suspended because of 5 yellow cards. और जेम्स मैकेटी तो वैसे ही नहीं खेलेगा कल. Yes, that's a good thing. That is a very big blow for them. Yes. Because they have lost their premium defensive midfielder and their top center back. So I think so वो एक बहुत important factor play करेगा. And अगर हम लोग की तरफ से बात करें for injuries, so again same thing. Erling Haaland, and so Guardiola has given an update that Erling Haaland is expected to be back in January because उसकी injury को, I mean, the pain जो उसको हो रहा, pain subside होने में time लगेगा. I mean because he एक तो उसका build भी आदि मानव जैसा है, इंसान जैसा थोड़ी है, उसका build अलग ही है, तो that takes to process a bit slower. तो इस हिसाब से I think so he will be back
if not Huddersfield then maybe I think so Newcastle के लिए उसको prepare कर रहे हैं. Yeah. If not And Huddersfield they will. good thing about January is that we don't have many games, so we can use that Correct. period very well. Yeah. And I think so. And I think so. Huddersfield के लिए भी probably things that I think Alvarez can handle that game. So Yeah. they probably want him that to come back directly for the Newcastle game. Yeah. For Doku, it's the same thing. Doku के लिए भी अभी तक कुछ आया नहीं concrete update, but I think so. Doku is also been seen for January, if not tomorrow's game. But since press conference अभी तक हुई नहीं है तो क्या पता कल आ जाए. But real time update दे दूं कि Ruben Dias is back in training, so Yeah. he will be. I think so. He will be available for selection tomorrow. Kevin De Bruyne, January again. I think so. He started training. Guardiola ने कहा था कि he started, but he's feeling fatigue. And obviously बात है because recovery के बाद से तो अभी कुछ हफ्तों में he has been training consistently, तो वो match fitness आने में time लगेगा. So all of them, so I think so by Newcastle game I could see कि all of them will be coming back. Yeah. तो यार अब इसका क्या है? I don't think so we'll go for predicted lineup because there is no point. Yeah. तो directly score line पे जाता हूँ मैं. क्या लगता है तेरे को? तीसरा पड़ गया क्या? Right in Offside. वो पड़ा but offside होगा. It was a good pass but it was offside. Yeah. तो Yeah. तेरा क्या है like what do you think कि score line क्या है? क्योंकि लाइनअप तो मतलब mean लाइनअप का कोई point नहीं बनता because I mean, see, this is the game. City can score as many as they want. मेरा एक risky prediction करना चाहूँगा मैं. Whatever number of goals but clean sheet. बस वो मिल जाए मैं खुश हूँ. रिस्की नहीं So, है. रिस्की नहीं है. this is- अभी तो clean sheet expect करता हूँ इस game से. Expect, but that's what I expected in like with against Palace as well. But what happened? We conceded 2 goals. तो जिस तरह से हमारे लास्ट 12 गेम से क्लीन शीट नहीं आ रही है. लास्ट 12 से क्लीन शीट है तो होपफुली बस कल क्लीन शीट रहे. एज अ स्कोर लाइन भाई I'll go 4-0. 4-0 I think that should not be a big deal. City should be able to deliver that. शेफील्ड लास्ट 6 गेम में से सिर्फ एक गेम जीता है. Yep. सॉरी लास्ट 7 गेम में से एक गेम जीता है. एक उसने ड्रॉ कराया था वो 5 Brighton से हाँ right. नहीं वो एस्टन विला वाला ड्रॉ करवाया था उसने. Oh yeah, Villa. Correct. Recent वाला right. Recent वाला yes. So मेरा I think so I'll go with the same scoreline 4-0. Or I'll kind of just because I'm more streak maintain करने to have difference in our scorelines. So I'll go with a 3-0. I will not go just to kind of maintain the difference. So yeah, I think so we have covered both the games. Because एक तो double game week था, so there was no point keeping two things. So we kind of wrapped it up everything in this one bundle. So yeah, I think so. This is from both of us at Boys and Blues for our Everton NOOBVIEW. By the way, we stop calling it review. We're calling it a NOOBVIEw because मतलब हम दोनों वैसे अपने आप को इतना तुर्रम खान नहीं मानते कि हम रिव्यू देंगे. हम सिर्फ हमारे NOOBVIEWs देंगे because we are occasionally right, often wrong. Yes. That's what we acknowledge that. We acknowledge that. We acknowledge that. Yeah. So मतलब we are watching. So doubters, and we know that. We won't see, we know that. Yeah, अगर तुम बोलोगे ये गलती है, हाँ होगी ना हमारी गलती. तुमने गलत बोला, हाँ पता है. तो yeah, so this is from both of us giving our opinion on our Everton NOOBVIEW, and so we call it No Mercy Toffees. So we are sure no mercy to Toffees anyway. Yeah. And before going, I just want to also give my appreciation towards the away crowd. Bro, I chants back to back आए जा रहे थे. That was. अरे यूनाइटेड वालों को पेल दिया यार. ओल्ड ट्रैफोर्ड इज फॉलिंग डाउन चल रहा है भाई. गुडिसन पार्क. And the call of भाई this fans का जिगरा देखना पड़ेगा. ये एवर्टन वालों को चीटिंग बास्टर्ड्स बुला रहा है. I was like, yeah, that was so funny, bro. कितना ironic, कितना funny था भाई. मजा आ गया. You cheating bastard. मतलब और पता है कब बोल रहे थे ये लोग जब गुडिसन पार्क जब टॉफीज फैंस खाली कर चुके थे आधा स्टेडियम. ये तब बोल रहा था कि क्या
क्या strategy, we are क्या chess we are चल रहा है भाई shameless, bro. इसमें? We are shameless. We are shameless As people say, we bro, are we are we shameless. are shameless. We are shameless. We're turning into shameless, entitled brats. Yes, Like yes, we are now seeing the other side of the world. कि अरे भैंचो, yeah, मतलब when you had those United or Liverpool or Arsenal वाला जो मतलब ये वो थे, अब हम वो देख रहे हैं कि how yeah, does it feel to be on the other side of the world? कैसा लग रहा है? yes, तो ये I mean ये I really wanted to, ये वीडियो अधूरा रह जाता अगर हम we would not have acknowledged yep, the fans, yep, the yes, chants, the noise and everything. Like I think so at one point when Grealish के पास जब बॉल थी तो एवर्टन फैंस बू कर रहे थे, वो उनकी आवाज दबा रहे थे. Like those yeah, 4,000 people stood against those 25,000 Evertonians and they kind of literally suppressing their voice and being behind the team. So I just want to see this happening almost all the games. ठीक है ना? I just do not, yep, ये बस क्योंकि support matter करता है and I hope yes, to just see this consistently in all the games. अब तो home game है भाई, अभी तो मतलब शेफील्ड वालों के yeah. पर्दे फाड़ो, सीधा सा बात है. So yeah, so आपकी क्या राय है on both the games? About आपको क्या, what do you think about the Everton game and what do you think about the Sheffield game? Please comment section में बताइए. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए. जो भी नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाइए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए. देखो फ्री है, कुछ लगने वाला नहीं है. ठीक है. एंड the reason why we're saying this because when you subscribe to our channel, it gives YouTube kind of an assurance that you're liking what you're watching or you're interested in what you're watching, so that can even help them for them to bump up at least to other people so that they can also get to know about what we do and they could also be a part of the family. So yeah, I think so. This is both of us signing off, and it's till I die. Come on, Let's City. go. Come on, City. Come on, Five City. trophies. Five trophies. Never Conquer the forget. world, and we go again. Conquer the world. World champions. Before going that, T-shirt, we would badge. But Yes, yeah, it's ours. It's ours.